y2 y. So then this fx means f x1 x2 xn जो इनकी वैल्यूज होंगी वो बेसिकली rm में होगा, दैट इज y1 y2 ym. तो आप इसको लिख सकते हैं y1 y2 ym. But these are functions of these coordinates y1 x1 x2 xn, and similarly this y2 x1 x2 xn and dot dot yn ym x1 x2 xn. So this is the coordinate representation of the function. So basically this y is equal to fx, this can be written explicitly in this form: y1 x1 x2 xn, y2 x1 x2 xn, ym x1 x2 xn. ये लास्ट टर्म पे हमने y1 की जगह f1 कर दिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं. आप इसको चाहें तो f1 x1 x2 xn, f2 x1 x2 xn, fn x1 x2, fm x1 x2 xn लिख सकते हैं. फिर हमने ये देखा था कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक सफिशिएंट कंडीशन हमने स्टडी किया कि अगर इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स del yi over del xj, where I varies from 1 to m, I varies from 1 to m, and j varies from 1 to n. If all these partial derivatives exist at some point, तो मान लीजिए कोई x0 आपका पॉइंट है और suppose all the partial derivative exist and continuous, तो ये हमको गारंटी देता है कि जो फंक्शन f होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, जो फंक्शन f होगा वो डिफरेंशिएबल होगा. और हमने ये भी देखा था कि अगर आप इन दोनों स्पेसेस की बेसिस को फिक्स कर लीजिए, इन पर्टिकुलर अगर हमने स्टैंडर्ड बेसिस जो आप E1 E2 En लेते हैं, अगर स्टैंडर्ड बेसिस हम ले लें, तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स को अगर आप इकट्ठा करें तो बेसिकली I varies from 1 to m and j varies from 1 to n. तो दे विल बी इन नंबर mn नंबर्स आपको मिलेगा. और इनको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स मिलेगा, जिसके ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो होगा del yi over del xj. Del yi over del xj is the element of ith row and jth column. So there will be m rows and n columns. तो इस तरह से, so this is basically the matrix representation of this you can say derivative f dash at the point x0 and with respect to your standard basis. अगर आप इसकी बेसिस को e लिखना चाहें, इसके बेसिस को e बार लिखना चाहें, तो e बार के रिस्पेक्ट में इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट द जैकोबियन मैट्रिक्स. तो ये आप ध्यान देंगे कि केवल जैकोबियन मैट्रिक्स, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो आप एक जैकोबियन मैट्रिक्स लिख देते हैं और कह देते हैं कि हाँ सब ये इसका डेरिवेटिव है. लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि ये डेरिवेटिव तभी है जब ये कंपोनेंट वाइज ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस एग्जिस्ट करें और कंटीन्यूअस हो. अगर कंटीन्यूअस है तो दैट इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल. मियर एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स, जैसे कि हमने पहले बताया था, mere existence is not sufficient for the existence of derivative of the function. But if it is differentiable, the matrix representation of this linear transformation is given by this Jacobian matrix. तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप स्टडी कर सकते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल केवल हम, बहुत ही सिंपल हमें लगता है कि अगर आपने ये समझ लिया है तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, जिसको बाद में भी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को. सो सपोज f is a function, suppose given from R2 to R2, such that say this fxy is x square minus y square, and suppose its y component is 2xy. Is 2xy. तो इसका अगर मान लीजिए कि डेरिवेटिव अगर कोई कहे कि इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो
यहाँ पे ध्यान दें कि जिसके पार्शियल डेरिवेटिव, तो बेसिकली दिस इज योर f1, दिस इज योर f2। तो यहाँ पे आपका f1xy is equal to x square minus y square and f2xy is simply 2xy। तो आप इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। तो डेल f1 अपॉन डेल x निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा 2x। डेल f1 अपॉन डेल y निकाल लीजिए, ये हो जाएगा -2y। डेल f2 अपॉन डेल x निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2y। एंड डेल f2 अपॉन डेल y निकाल लीजिए, हो जाएगा 2x। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं, ऑल दीज फंक्शंस आर यू कैन से पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस, चाहे वो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो, y के रिस्पेक्ट में हो, ऑल दीज फंक्शंस आर पॉलिनोमियल फंक्शन एंड यू नो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। तो इसलिए जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं कंटीन्यूअस, तो केवल ये पार्शियल डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी इंप्लाई कर देगी कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब इस फंक्शन का अगर इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहें, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट आप ले लीजिए, मान लीजिए आपका x0 पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया 10 ले लीजिए, 10 पॉइंट पे आप इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। सो f dash 10, so its matrix representation with respect to standard basis is nothing but this del f1 upon del x at the point 10 and del f1 upon del y at the point 10, del f2 upon del x. Sir, someone wants to join. Oh, yes. Yeah. And this del f1 upon del y at 10, del 2, sorry. तो इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 पे इसकी वैल्यू निकालिए, x is equal to 1, y is equal to 0, so this is 2, x is equal to 1, y is equal to 0, it is 0, this is 0, and this is 2. So this is the matrix representation of your linear transformation. In particular, अगर मान लीजिए इस f dash, इस पॉइंट को अगर x0 आप मान लीजिए कह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में लिखना चाहें, सपोज v is equal to your v1 e1 plus v2 e2, तो आप इस v1 v2 के फॉर्म में भी जो है इस v पे इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट v1 एंड v2 यू कैन गेट दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको आप v1 v2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एज ए कॉलम वेक्टर, तो 2v1 2v2, so this is nothing but 2v1 2v. So this is basically the derivative of this function from R2 to R2. तो इस तरीके से और भी एग्जांपल्स आप लोग स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट डेरिवेटिव ऑफ ए मल्टीवेरिएबल फंक्शन। आप ये तो R2 to R2 हमने लिखा, आप और भी किसी वेरिएबल के लिए n और m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप फंक्शंस स्टडी कर सकते हैं। ओके, now I am coming to a very important theorem of this multivariable calculus. It is very, very important, not only for this particular chapter, not only for this particular calculus course. It's useful everywhere in the whole mathematics and even beyond mathematics, what is called inverse function theorem. तो inverse function theorem का थोड़ा सा प्रिपरेशन हम करेंगे, उसके बाद हम उसको स्टेट करेंगे, प्रूफ करेंगे. So the first result which will be used in the proof of inverse function theorem is contraction principle. So I'm going to define a map which is called contraction, and will show that if your space, it's actually not only true for this Rn, it's true for any metric space. So I am proving, you can say, a little weaker version. For in general, any complete metric space, if there is a contraction mapping, you are going to
fixed point, but is also known as initial theorem for fixed point theorem, initial level of fixed point theorem. So suppose instead of considering this Rn and a norm on this Rn and a distance function induced from this norm, जैसा कि हमने बताया था dxy is equal to norm x minus y, तो ये एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं कि नॉर्म है, यूक्लिडियन नॉर्म Rn पे है, जो कि जनरली हम कंसीडर करते हैं. इसके जगह पे अगर हम एक जनरल मैट्रिक स्पेस ले लें, मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन भी हमने बताया था, तो उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग को डिफाइन करने जा रहे हैं, व्हाट इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, और फिर हम कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल या कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम या ब्राउअर फिक्स पॉइंट थ्योरम की बात हम करें. सो व्हाट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन ए मैट्रिक स्पेस. So suppose X D be a metric space. So let X be a metric space. Metric space means a set with a function from X cross X to R satisfying three conditions: non-negativity condition, and symmetry condition, and triangular inequality condition. So it's a metric space with this metric D. XD be a metric space, you should say. This XD be a metric space. So metric space means always a set with a metric. एक ही सेट पे आप बहुत सारे मैट्रिक को भी डाल सकते हैं. Now suppose if this phi is a map from X to X itself, X to itself, and if there is a number, if there is a number C which is strictly less than 1, which is strictly, this is a real number strictly less than 1, and of course it is positive, such that this D phi x phi y, this is less than equal to C dxy, and this should be true for every xy in your metric space X. Then this phi is called a contraction. Then this phi is called a contraction. तो जैसे इसका मतलब यह है कि फाई एक्स, जैसे अगर आप इवन अपना R2 ले लीजिए और R2 पे मान लीजिए फाई आपका इस तरह से मैप है, फाई एक्स वाई इज इक्वल टू से 1/2x 1/2y, तो इस तरह का डिफाइन कर लीजिए. तो कोई भी दो पॉइंट आप मान लिए लेते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, एनी टू पॉइंट यू कैन टेक. आप चाहें तो एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट ले लीजिए, एक 1 0 ले लीजिए, 2 0 ले लीजिए. तो 1 0 और 2 0 के बीच का डिस्टेंस अगर आप यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 1. द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 0 एंड 2 0 इज जस्ट 1. So distance between 1 0 and 2 0 is Euclidean distance is 1. अब इस phi के द्वारा इस 1 0 का मैप लीजिए तो हो जाएगा 1/2 0, और 2 0 का मैप लीजिए इस phi के द्वारा तो हो जाएगा 1 0. So phi 1 0 is actually equal to 1/2 0, and phi 2 0 is equal to 1 0. Now the distance between these 2 points, you can say distance between 1 0 and half 0, that is half. So the distance between phi 1 0 and phi 2 0 is equal to half. So you see this distance is strictly less than the distance between x and y, and here is some scale factor C. This is very important. I'll see the importance of this factor C. So because such a C is here, so this is a contraction map. You can see this is true for any xy. कोई भी आप xy ले सकते हैं, इसका जनरल xy के लिए आप स्टडी कर सकते हैं. x1 y1 ले लीजिए, x2 y2 ले लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1, डिस्टेंस बिटवीन x2 y2 आप कैलकुलेट करेंगे और आप देखेंगे कि आपके लिए c is equal to 1/2 मिल जाएगा, such that this inequality hold for every xy in R2. So therefore this is a contraction map. Contraction का मतलब आप
जो मैपिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इन सम सेंस यू कैन से दिस इज ए इन पर्टिकुलर अगर ये कह सकते हैं कि ये अगर इक्वलिटी हो जाए और c इज इक्वल टू 1 हो जाए तो आप उसको कहते हैं आइसोमेट्री। तो इन सम सेंस यू कैन से दिस इज ए जनरलाइजेशन ऑफ आइसोमेट्री। तो कॉन्ट्रैक्शन मैप जो है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो दूर की चीजें हैं वो नजदीक आ रही हैं। आप ऐसे इसको रफली समझिए कि जो दूर की चीजें हैं, जो x और y के बीच का जो डिस्टेंस है उससे phi x phi y के बीच का डिस्टेंस है वो कम हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। ओके, नाउ हियर इज द you can say fixed point theorem, a initial level of fixed point theorem। तो उसको स्टेट करने के पहले एक और आइडिया हम आपको बताना चाहेंगे कि आइडिया ऑफ कंप्लीटनेस इन अ मैट्रिक स्पेस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि R जो है आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज कंप्लीट। तो यहाँ पे कंप्लीटनेस के आपने कई आइडिया आपने देखा, हमने शुरू में हमने बताया भी था कि दिस इज कंप्लीटनेस विद रिस्पेक्ट टू बाउंडेडनेस। ये बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है। और फिर दूसरा हम कह सकते हैं सीक्वेंशियल कंप्लीट भी है। दिस आर इज आल्सो सीक्वेंशियल कंप्लीटनेस। ये होता है कि अगर कोई इसमें इस सेट में कोई कॉशी सीक्वेंस अगर आप ले लीजिए और वो कन्वर्ज करने लगे, if every Cauchy sequence is convergent in a metric space, we say that the metric space is complete. We say that the metric space is sequentially complete. So in particular, this R is sequentially complete. In fact, this Rn, this is also sequentially complete. So this is complete metric space. This is complete metric space. So in particular, this Rn with respect to Euclidean metric is a complete metric space. तो ये जो थ्योरम हम लिखने जा रहे हैं वो केवल Rn के लिए नहीं, जैसे कि हमने पहले बताया कि हम जनरल मैट्रिक स्पेस की बात करने जा रहे हैं जो कंप्लीट हो। सो हियर इज द थ्योरम। So if X is a complete metric space, and phi is a contraction map, from X to X, then there exists unique point X in X such that this phi X is equal to X. There exists unique, ये नोटेशन आप लोगों ने शायद देखा भी हो या ना देखा हो तो देख लीजिए। देयर एग्जिस्ट, इसको यूनिक सिंबल कहते हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉइंट, आप लिख भी सकते हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉइंट इन एक्स सच दैट फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये इंटरेस्टिंग है, आप इसमें देख सकते हैं कि इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शन मैप अगर आप लीजिए तो एक यूनिक पॉइंट आपको मिलेगा जिसके लिए फाई एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 0 0 का इमेज आप लीजिएगा तो वो 0 0 हो जाएगा। सो दिस इज द यूनिक पॉइंट फॉर दिस कॉन्ट्रैक्शन मैप। इसके अलावा और कोई पॉइंट ऐसा नहीं बता सकते हैं कि जिसके लिए phi x की वैल्यू x हो जाए। So this is the uniqueness part. There exists a point and also that point is unique. एक से अधिक आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। So this is the statement of the theorem that if a metric space is complete, then you take any contraction map, it fixes a unique point. Is it okay to everybody? Can you see this geometrically? This result? That whenever you take contract, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली एक पॉइंट आपको मिलेगा, एग्जैक्टली यूनिक पॉइंट आपको एक और केवल एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो फिक्स करेगा, जो फिक्स होगा। राइट? Shall I continue? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So proof of this theorem. So uniqueness part is very simple. So let us prove first uniqueness part and then we'll come to existence part. मान लीजिए कि एक पॉइंट कम से कम है and if possible there are more than one point. If possible let there are more than one point and then we'll show that point is unique. जो दो पॉइंट आप कह रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ऐसा संभव हो कि दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं x और y, दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं such that phi x is equal to x,
और 5y इज इक्वल टू y। ठीक है, एक पॉइंट अभी फॉर द मोमेंट मान लीजिए कि एग्जिस्टेंस पार्ट आपको मालूम है, हम यूनिकनेस पार्ट पहले प्रूव करना चाहते हैं। सपोज देयर आर मोर देन वन पॉइंट एंड देन वी शो दैट दिस x इज एक्चुअली इक्वल टू y। इसका मतलब एक से अधिक नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट विल शो द यूनिकनेस पार्ट। फर्स्ट विल शो द यूनिकनेस पार्ट। ये आसान के नाते हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब हमने कर दिया तो आप लोग एग्जाम में भी अगर आता है तो ऐसा ही लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा। ये केवल हम चूंकि आसान पार्ट है इसलिए पहले दिखा रहे हैं, फिर थोड़ा सा एग्जिस्टेंस वाला पार्ट थोड़ा इन्वॉल्व है, उसको हम बाद में दिखाएं। सो विल शो द यूनिकनेस पार्ट। इफ पॉसिबल, let x, y be 2 points in x such that phi x is equal to x and phi y is equal to y. Right? Now calculate the distance between phi x and phi y. The distance between phi x and phi y. So because phi x is equal to x, so this is exactly the distance between x, y. But you know, by definition of contraction map, the distance between phi x, phi y is less than equal to c distance between x, y. Right? What it means? So the distance between x, y is less than equal to distance between c times distance between x, y. So what it means? What it means? क्या इससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं? C इज फिक्स नंबर, C में कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हैं, C में आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा? सर दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 हो। तो कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सर यही कंडीशन एक बनती है इसमें, और क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो सेम ही दिखा रहे हैं, dxy is less than equal to c times dxy and c is a fixed number. C is a fixed number. C number is actually less than 1. This is important. C is less than 1. अगर C equal to 1 भी हो जाता, less than equal to 1 हो जाता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, because this is less than equal to C और C less than equal to 1, तो ठीक है, dxy less than equal to dxy तो equal to तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। But this is strictly less than is very important. Strictly less than is very important. What you do, you can write, you take just this dxy common. So this dxy common, इसको left में लेके चले आइए और dxy into, you can say this 1 minus c, this is less than equal to 0. Right? And this 1 minus c is a fixed number. For the whole map, this c is fixed, remember. So 1 minus c must be positive number. So this must be positive. तो पॉजिटिव नंबर से आप इनइक्वालिटी को डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर दिस dxy लेस देन इक्वल टू 0. But you also know dxy distance between any two points is always greater than equal to 0. So the only one possibility is that dxy is equal to 0. So since dxy, you know that dxy is always greater than equal to 0 and dxy यहाँ से आपको मिला less than equal to 0. So this is only true is dxy is equal to 0. So therefore the distance between x and y is 0. और फिर आप मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं कि dxy is equal to 0, this implies x equal to y. Right? So therefore, whenever you assume that there are 2 points, the 2 point has to be same. Therefore, there is unique point. Now the existence part. Is it okay? This second part, uniqueness part is okay? Yes, sir. Okay. So yes. So now I am considering the existence part. Existence part. कम से कम एक पॉइंट आप दिखा दीजिए कि हाँ साहब ये x ऐसा पॉइंट होगा such that phi x is equal to x. So let us take a point, say x0 in x. ये आपका मेट्रिक स्पेस है और इसमें कोई एक पॉइंट आप ले लीजिए x0 और मान लीजिए कि इसका phi से मैप जो है वो बन रहा है x1 पे जा रहा है। तो सपोज दिस x1 इज phi x0। फिर इस x1
का इमेज फाई के द्वारा मान लीजिए, इस पे अगर फिर फाई को ऑपरेट कराइए तो वो x2 पे जा रहा है, फिर x2 पे फाई को ऑपरेट कराइए वो x3 पे जा रहा है। इस तरह से एक आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे फाई अप्लाई हो रहा है। फाई इज अ मैप फ्रॉम x to itself, फाई इज अ मैप फ्रॉम x to itself। तो हर पॉइंट का कहीं इमेज देगा। तो मान लीजिए x0 का इमेज x1, x1 का इमेज x2, x2 का इमेज x3, x3 का इमेज x4 एंड सो ऑन। So define this xn or xn plus 1, you can say, as this phi xn for n is equal to 0, 1, 2 dot dot and so on। तो इस तरह से हम एक सीक्वेंस बना ले रहे हैं। phi x0 का इमेज x1, x1 का इमेज x2, x2 का इमेज x3, x3 का इमेज x4 and so on। Is it okay? Have you seen the sequence, this xn plus 1? Yes, sir. Yeah. So now, Yes, sir. now I am calculating the distance between two consecutive element of this sequence। ये जो मान लीजिए एक एलिमेंट यहाँ पे xn मिल रहा है और उसका अगला मिलेगा xn plus 1, इनके बीच का हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो what is the distance between this xn and xn plus 1, or you can say xn plus 1 and xn, सिमेट्रिक है, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो for n greater than equal to 1, this is equal to, so in fact this xn plus 1, you can write this phi of xn, and xn can be written as phi of xn minus 1, phi xn and phi xn minus 1. Now you can apply the definition of contraction map. So phi xn and phi xn minus, so this is less than equal to c times distance between xn and xn minus 1. Is it okay? Yes, sir. Okay. Now you repeat this process. Again, you can write this xn as phi of xn minus 1 and xn minus 1 is phi of xn minus 2. So you can write this is less than equal to c square distance between xn minus 1 and xn minus 2. Okay. Now continue this process. So by induction, you can show that this is actually less than equal to cn, c to the power n, and the distance between x1 and x0. Dot dot dot. Is it okay? c to the power n, यहाँ पे देखिए c के पावर का और इसके सफिक्स का सम n है, 1, इसके सफिक्स का सम n है, और यहाँ वाला नंबर इससे एक ज्यादा बड़ा सफिक्स है, यहाँ 2 है, n माइनस 2 है, दोनों का सम n है, और ये सफिक्स एक इससे बिगर है, यहाँ n है, ये 0 है, सम दोनों का n है, और ये एक से एक बड़ा है। अब इसके आगे तो नहीं जा सकते, x1 x0, तो अब इसके आगे तो जा नहीं सकते, तो यहीं पे आप स्टॉप करते। इसका मतलब nth लेवल पे जो दो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस के एलिमेंट हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन इक्वल टू c टू द पावर n एंड डिस्टेंस बिटवीन। तो फाइनली हम x1 x0 के बीच के डिस्टेंस के टर्म में हमने दो कॉन्जिक्यूटिव जो सीक्वेंस के एलिमेंट हैं उनके बीच का डिस्टेंस एक तरह से कहीं एस्टिमेट हमने किया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एस्टिमेशन फॉर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस नंबर, लेस देन इक्वल टू दिस नंबर। Now, I am calculating not only for the consecutive element of any two elements, say xn and xm. Now, the next part is to calculate the distance between xn and xm. And suppose for definiteness, this n is less than, suppose n is less than m. Okay. So yes, maybe you can think of 10 and 20, something like that. So you can write, you can use the, so here is your xn, again its image goes to xn plus 1 via phi map. Now via phi map, this goes to xn plus 2 and dot dot. Finally, you reach after some step to xm, n is less than m. So you can use using these midpoints and using triangular inequality, the distance between this and this is less than equal to distance between this and plus distance between this and plus distance between this and next term and so on. So this is by triangular inequality, which is the property of metric space,
this is less than equal to the distance between this xi and xi minus 1. And I varies from n plus 1 to m. Is it okay? जब n plus 1 यहाँ पे रखिएगा तो x n plus 1 और xn के बीच का डिस्टेंस, तो n plus 1 xn plus xn plus 2 xn plus 1 plus xn plus 3 xn plus 2 plus dot and so on. और जब m रखेंगे तो xm xm minus 1. इसका मतलब आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन सबके सम से छोटा होगा xn और xn के बीच का डिस्टेंस. इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ठीक है ना? भाई इसमें देखिए ये xn और xm ये सीक्वेंस के दो हमने बताया ना, एक सीक्वेंस बनाया था कि x0 से स्टार्ट किया था, x0 से स्टार्ट किया था, अगला एलिमेंट x1 हो गया, 5 को अप्लाई किया, फिर अगला एलिमेंट x2 हो गया, 5 को अप्लाई किया. इस तरह से हमको कहीं एक जगह xn मिल गया और इसी तरीके से 5 को फिर अप्लाई किया, 5 को अप्लाई किया, फाइनली यहाँ पे हम xm हमको एलिमेंट मिल गया. हमको इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम एस्टिमेट करना चाहते हैं. तो सबसे पहला स्टेप, चूंकि हम दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट जो है इस सीक्वेंस के, उनके बीच का डिस्टेंस हमको पता है. हमने अभी फार्मूला एक डेवलप किया है जिसमें xi प्लस 1 के बीच का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है. तो हम क्या कर सकते हैं कि इस डिस्टेंस को, जो xn और xm के बीच का डिस्टेंस है, वो दो कॉन्जिक्यूटिव जो एलिमेंट्स हैं उनके डिस्टेंसेस के सम से एस्टिमेट हम करा सकते हैं. So because we know that the distance between xn and xn plus 1, xn plus 1, xn plus 2, xn plus 2 and xn plus 3. So at least we can write an upper bound for the distance between xn and xm. Is it okay? So this xn and xm less than equal to xn, xn plus 1, xn plus 1, xn plus 2, xn plus 2, xn plus 3 and so on. इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सप्लोर करके लिखना चाहें. So this is equal to xn, xn plus 1 and plus distance between xn plus 1 and xn plus 2 and plus dot dot last वाला जो टर्म होगा xm minus 1 and xn, right? Now xn plus 1, अगर ये पिछला आप फार्मूला देखें तो xn this is actually yes, xn plus 1 xn plus 1 के बीच का डिस्टेंस है c to the power n and x1 0. ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म होगा वो हो जाएगा c to the power n. So this is less than equal to c to the power n and distance between x1 0. नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? This is c to the power n plus 1 and again x1 0. And the last term is similarly you can write this c to the power, जो इसमें दोनों में छोटा है n और n plus 1 सफिक्स, वो c का पावर हो रहा है. n plus 1 n plus 2 में जो छोटा है वो c का पावर हो रहा है. यहाँ पे m minus 1 छोटा है तो c to the power m minus 1 and distance between x1 and x0. So you can take x1 x0 x1 x0 x1 x0 x1 x0 x1 x0. So you can take this dx1 x0 common to right hand side. So dx1 x0 and you will get this a geometric progression with first term c to the power n and common ratio c to the power n plus 1 plus dot dot c to the power m minus 1. Right? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you can also see this is less than equal to c this d x1 x0 and this is c to the power n. If you want you can take outside, this is 1 plus c square plus dot dot something c to the power something, right? C to the power m minus 1 minus n, m minus 1 minus n. But you can also think of this, that series is less than equal to this series with infinite terms. That is okay.
सीरीज विद इन्फिनिट टर्म, इज देयर एनी प्रॉब्लम? इन्फिनिट वाले में कुछ और जुड़ जाएगा, क्योंकि सब पॉजिटिव, इसलिए कोई दिक्कत तो है नहीं, आप इन्फिनिट तक जोड़ सकते हैं जी। ओके, यहाँ पे केवल m ही m-1 Yes. n टर्म्स हैं, हमने इन्फिनिट तक लिख दिया, लेस देन इक्वल टू लगा दिया, क्या दिक्कत है? सो दिस इज लेस देन इक्वल टू, and this is a geometric progression with the common ratio c, which is less than 1. So of course it is convergent series. So this is c to the power n upon 1 minus c, and distance between x1 x0. So the distance between xn xm, this is less than equal to cn upon 1 minus c. So the c is a fixed number, c is a fixed number less than 1, and this distance is some distance between x1 and x0 is also some fixed number, it's a constant number. So you see, as this n tendings to infinity, as this n tendings to infinity, you can see that this quantity will converge to where? Because c is less than 1, ये सभी चीजें कांस्टेंट हैं, जब n infinity को अप्रोच करेगा तो this quantity will approach to 0. It means for every positive epsilon you can get a natural number such that whenever this nm greater than equal to that number, the distance between xn and xm is less than epsilon. So therefore this implies that the sequence xn is going to be a Cauchy sequence. Are you getting my point? So therefore this xn is a Cauchy sequence. So you can write that this converges to 0 as n tending to infinity because c is less than 1. Is it okay? Yes, sir. Okay. Now you can use this completeness part now. So here you have assumed that this is a complete metric space. हमने hypothesis में माना है this is a complete metric space. So complete metric space means every Cauchy sequence is convergent. So therefore this Cauchy sequence must be convergent. So since this x is complete, this xn must be convergent to some point. So this xn will converge to a point, say x. This xn will be convergent. Since x is complete, the sequence xn is a convergent sequence, and suppose it converges to a point x for some x belongs to, and this x must belongs to x because of completeness, must belongs to x. Okay. So up to this point, is it okay to everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. Now, since this phi is a contraction map, you can also see this phi is continuous. This phi is continuous. You can see from the definition of this, whenever distance between x and y will be less than delta, the distance between phi x and phi y will be less than equal to c into delta. तो आप इस तरह से आपको एक डेल्टा मिल जाएगा, epsilon upon c के इक्वल होगा, such that you can see the distance between phi x and phi y is less than epsilon whenever distance between x and y is less than delta, and therefore this contraction map is always continuous. In fact, uniformly continuous. In fact, because this xy is arbitrary point of x. So any contraction map on a complete metric space, in fact, completeness की भी कोई जरूरत नहीं है, is always uniformly continuous. So यहाँ पे लिख सकते हैं is not only continuous, uniformly continuous. So any contraction map is always continuous and uniformly continuous. तो इसका एडवांटेज ये क्या होगा? इसका एडवांटेज ये होगा कि ये जो xn सीक्वेंस है, ये x पे कन्वर्ज कर रहा है। तो आप याद करिए कि इसका जो कंटिन्यूअस मैप से इसका जो इमेज होगा, दिस phi xn, दिस शुड कन्वर्ज टू phi x.
So limit n tending to infinity is actually equal to phi x. So this phi x is actually equal to limit n tending to infinity and limit n tending to infinity, that is phi xn. But phi xn is nothing but xn plus 1. This xn plus 1 n tending to infinity. But the limit of xn is x itself. Limit of xn, the sequence xn is x itself. So therefore phi x is equal to x. To complete the proof. Is it okay? Yes, sir. तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर कोई कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, इन पर्टिकुलर आपका Rn एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, उसमें कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्शन मैप अगर आप लेते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्शन मैप जो हमेशा यूनिक फिक्स पॉइंट रहता है, ऑलवेज हैज यूनिक। और आप लोग देखेंगे कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट जो थ्योरी है मैथमेटिक्स में बहुत ही वेल डेवलप्ड थ्योरी, इनफैक्ट एक तरह से मैथमेटिक्स का ब्रांच है। आप बल्कि साउथ इंडिया में अगर आप जाके देखें तो बहुत ऐसे यूनिवर्सिटीज है जहाँ फिक्स पॉइंट थ्योरी पे लोग रिसर्च खूब करते हैं, खूब ढेर सारा रिसर्च करते हैं। सो हमारे BHU में भी कुछ लोग इस पे रिसर्च करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स रादर देन अ थ्योरम। और बहुत सारे इसके सैकड़ों वर्जन इस फिक्स पॉइंट थ्योरम के, तमाम सारे स्पेसेस में लोग फिक्स पॉइंट थ्योरी को यूज करते हैं। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंस। और केवल ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक ये थ्योरम है और इसके जनरलाइजेशन बहुत सारे हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एक इसका एप्लीकेशन हम आप लोग अपने कैलकुलस में दिखाएंगे, इन पर्टिकुलर इन द प्रूफ ऑफ इनवर्स फंक्शन थ्योरम। ओके, जस्ट अ मिनट। Yeah. So now I'm coming to the main result of this chapter, the very, very important result, what is called inverse function theorem. Inverse function theorem. तो इनवर्स फंक्शन थ्योरम आप बहुत सारे लेवल पे आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर केवल सेट थ्योरेटिक लेवल पे आप देखें, जैसे कोई भी सेट और सेट पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात हम करते हैं, अगर केवल सेट थ्योरेटिक लेवल पे अगर आप इनवर्स फंक्शन थ्योरम की बात करें तो आप जानते हैं कि अगर कोई मैप अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स आपको मिल जाएगा। For every point, if it is 1, 1 and on 2, it is the inverse function exists, right? तो इस तरीके से आप देखेंगे। फिर कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर अगर आप डाल दें, अगर आप टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर डाल दें तो आप इनवर्स फंक्शन थ्योरम की बात कर सकते हैं। और उसमें आपको उस फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टी देखना होगा, इन पर्टिकुलर कंटिन्यूटी की बात करनी होती है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है जो कंटिन्यूअस है तो क्या आपको कोई इनवर्स फंक्शन ऐसा मिलेगा जो खुद कंटिन्यूअस होने लगे हर पॉइंट पे। If you get if some continuous function is given, can you get always the inverse function which is also continuous? तो इस टाइप की चीजें हम लोगों ने, अभी चूंकि आप लोगों ने टोपोलॉजी नहीं पढ़ा है इसलिए इसको आप लोग पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम लोग चूंकि कैलकुलस की बात कर रहे हैं तो हम जिस इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे
उसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे कि अगर कोई फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइंड है, आप चाहें तो उसको आर का सबसेट कह सकते हैं पर्टिकुलर केस में। मोर जनरली हम आर एन का सबसेट लेके चलेंगे कि आर एन का कोई ओपन सबसेट दिया गया है और आर एन के ओपन सबसेट से आर एन के ओपन सबसेट पे एक मैप दिया हुआ है, और हम स्टडी करेंगे कि क्या इनवर्स फंक्शन हमको मिलेगा, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे क्या जो इनवर्स फंक्शन मिलेगा वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, वो क्या कंडीशंस हो, क्या हमेशा आपको ऐसा मिल जाएगा इनवर्स फंक्शन जो हर पॉइंट पे डिफाइंड हो और डिफरेंशिएबल भी हो, और अगर नहीं तो क्या कंडीशन होगी, क्या कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन आप बता सकते हैं कि हाँ साहब एक फंक्शन हम आपको दे दें और आप हमें बता दिए कि हाँ साहब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो इनवर्स फंक्शन मिलेगा और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। सो आई एम टेलिंग दोस काइंड ऑफ कंडीशंस इन दिस थ्योरम। तो कुछ हम पर्टिकुलर केसेस हम पहले मोटिवेशन के लिए स्टडी करना चाहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सिंपली हम आर एन एक वेक्टर स्पेस कंसिडर करें और इस आर एन में हम सिंपल ट्रांसलेशन मैप ले लें। सपोज एफ इज ए मैप फ्रॉम आर एन टू आर एन, एज ए वेक्टर स्पेस आर एन हम कंसिडर कर रहे हैं, एंड सपोज वी कंसिडरिंग दिस translation by some vector such that this fx is equal to this x plus say a, x plus a, right? तो इसमें ऐसा होगा कि कोई भी जो वेक्टर 0 है, ये आर एन आप समझ लीजिए, आर एन है, एंड दिस इज ए जस्ट ट्रांसलेशन बाय वेक्टर ए। हर वेक्टर जो है, अगर ए वेक्टर आप ऐसे कोई वेक्टर लेते हैं, अब वैसे ही वेक्टर ले लीजिए, instead of taking vector parallel to x-axis, you can take a vector, this arbitrary vector a. So everything is translated by this vector. Everything is translated by this vector. अगर a के कंपोनेंट्स अगर आप लेते हैं a1, a2, an, तो आप इस fx के कंपोनेंट x1 plus a1, x2 plus a2, xn plus an, and so on. So this fx can be written as this x1 plus a1, x2 plus a2 dot dot xn plus an. अब इसके इनवर्स के बारे में आप सोच सकते हैं कि क्या इसका इनवर्स आपको मिलेगा। तो व्हाट अबाउट इनवर्स ऑफ x? तो इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन f आप यहां से ट्रांसलेट करके पहुंच रहे हैं, आप बैक हो जाइए ए वेक्टर से, आप बैक हो जाइए, यानी इफ यू कंसिडर ए ट्रांसलेशन बाय ए वेक्टर माइनस ए, दैट इज द इनवर्स ऑफ दिस मैप एक्चुअली। So this f inverse x is nothing but x minus a, right? So you can see this f is actually continuous, f is differentiable, and this f inverse is also continuous and differentiable. आप चाहें तो इस a के बजाय आप कोई दूसरा वेक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं. In particular, if you want, you can consider a vector of this type. In fact, we needed this kind of translation. That is why I'm considering that kind of complicated vector. So let's consider a vector of this form b minus a instead of just translation by. You can translate by any vector. So maybe you can replace this vector a by any vector, and that vector a, maybe you can think of this b minus a, capital B minus a, right? So in that case, here its inverse is just a translation by the vector a minus b, and that inverse is continuous as well as differentiable. Is it okay to everybody? Are you getting my point? That if f is simply a translation by some vector, its inverse is actually, it is also a translation by the vector a minus b, and that inverse is in fact continuous and smooth. So it always exists. Whenever you consider a translation by a non-zero vector, and you can give its inverse by again translation by a negative vector, that is minus a. Is it okay? आप लोग कनेक्टेड है ना? कोई हाँ या नहीं बोल सकता है क्या? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये सिंपल एक ट्रांसलेशन हमने लिया है. तो
ट्रांसलेशन का जो इनवर्स होगा, ये Rn to Rn एक मैप हमने पूरे Rn में ले लिया। Rn to Rn एक मतलब आपसे कोई पूछे कि चलिए साहब कोई सिंपल सा एग्जांपल बताइए, आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनवर्स फंक्शन थ्योरम की बात कर रहे हैं, कोई सिंपल एग्जांपल पहले बता दीजिए, दिखा दीजिए कि हाँ उसका इनवर्स हमेशा मिलता है। तो मैंने वो सिंपल सा एग्जांपल बताया कि आप अगर ट्रांसलेशन वेक्टर ले लीजिए किसी भी वेक्टर के द्वारा, एनी वेक्टर, ट्रांसलेशन बाय एनी वेक्टर बट एनी फिक्स्ड वेक्टर, एक बार ले लिए फिर उसके बाद उसको फिक्स रखिए। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट के लिए एक ट्रांसलेशन किया, दूसरे पॉइंट पे दूसरे ट्रांसलेशन कर, नहीं। A is a fixed vector and you translate it your vector by this constant vector A, then its inverse always exists, and that inverse also defined on the whole Rn. It is differentiable, and this kind of map which is differentiable and its inverse is also differentiable is called diffeomorphism. ऐसे मैप को हम कहते हैं diffeomorphism. तो F एक्चुअली जो है वो एक diffeomorphism बन जाता है। F एक diffeomorphism। एक दूसरा मैप हम ले रहे हैं, suppose this F is a map from Rn to Rn, and suppose A is a matrix. सर प्लीज एक बार डिफ्यूमॉर्फिज्म को डिफाइन कर दीजिए। डिफ्यूमॉर्फिज्म का मतलब ए फंक्शन f फ्रॉम, आप चाहो तो ओपन सबसेट ले सकते हो, ये वैसे तो इन जनरल Rn पे डिफाइंड है, इसको हम डिफाइन करेंगे। फिलहाल यहाँ आप समझिए कि f is a function from u to u which is subset of Rn to Rn which is differentiable, and its inverse, if f is differentiable and its inverse which is also a map from fu to u, ये कहां से कहां तक होगा, fu to u तक ये मैप डिफाइंड होगा। fu भी Rn का सबसेट है और u भी Rn का सबसेट है। तो if its inverse is also differentiable at each point of this domain fu, तो अगर f और f inverse दोनों डिफरेंशिएबल हो तो ऐसे मैप को हम कहेंगे डिफ्यूमॉर्फिज्म। Diffeomorphism means f is differentiable and its inverse is also different. Its inverse is defined first at all point of its domain and is also differentiable at each of its point. We say that it's a diffeomorphism. Right? Okay, sir. Yeah. Now I'm considering another example. So suppose this A is any n cross n matrix. A is a matrix, you can say, of this form Aij, the matrix of order n cross n, and you consider this map, this fx is equal to ax. So this x is considering here is a column vector and this is a matrix of order n cross n. So basically this is a linear transformation. So basically if you multiply this column vector by this matrix, you will get a linear. So this f is basically a linear transformation from Rn to Rn, and you know its derivative, the derivative of f x is the linear transformation itself, and its matrix representation is nothing but this matrix A. Right? Now suppose this A is non-singular. Suppose this determinant of this matrix A is not equal to 0. तो जब अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो A इनवर्स आपको मिल जाएगा। You can get A inverse. Now define a map G again from Rn to Rn such that this Gx is equal to this A inverse into x. Right? Is it clear to everybody? Yes, So sir. if this determinant, अगर determinant 0 हो जाएगा तब तो दिक्कत है, but if determinant is not equal to 0, then this A inverse exists. And suppose this map Gx which is equal to A inverse x. Now you can show that this f and g are basically inverse to each other. So this g is inverse of f and f is inverse of g. Right? And its derivative, the derivative of this g is nothing but this map A inverse. That is the derivative of f at a point x
is the matrix A, or its matrix representation is A, and the derivative of this map G, which is the inverse function actually, its derivative at the corresponding point is nothing but this A inverse. इसका मतलब इन दोनों की जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे वो एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स मिलेंगे, right? And therefore this kind of map is actually a diffeomorphism. This is also a linear transformation and therefore differentiable. So this F and G are inverse to each other and both are differentiable, and therefore these are also diffeomorphism. But the important condition, in fact necessary and sufficient condition, is that this for the existence of such a diffeomorphism, that this determinant of A should be non-zero. अगर इसका determinant 0 हो जाएगा तो इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि एक सब स्पेस को, चाहे वो कह सकते हैं कि वो एटलीस्ट जो सब स्पेस, इसके जो कर्नल में सब स्पेस मिलेगा उसका डायमेंशन 1 या 1 से अधिक होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होने के लिए जरूरी है, नॉन जीरो होने के लिए जरूरी है कि जो इसके डेरिवेटिव, दिस डेरिवेटिव शुड बी इंजेक्टिव, डेरिवेटिव शुड बी इंजेक्टिव। डेरिवेटिव आपका इंजेक्टिव अगर मैप है तो इसका मतलब इसके कर्नल में केवल 0 एलिमेंट आपको मिलेगा इसके डेरिवेटिव में, और ये डिटर्मिनेंट आपका जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा। तो आप बस ये समझें कि अगर ये f एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लेते हैं सच दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर, देन इट इज इन्वर्टिबल। It is invertible, in fact, on the whole domain, and its inverse is the matrix representation of its inverse. Matrix representation of, in fact, the derivative of its inverse is given by the matrix inverse of the given matrix A. Is it okay to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. These are two very important particular cases of inverse functions. You can say inverse function theorem. So I will prove in general, but again I will start from a very simple example of one variable calculus. So next turn पे हम लोग one variable calculus का एक simple example लेंगे जो differentiable function होगा और उसका inverse भी differentiable होगा। और ये दो जो important result हमने बताए हैं कि translation और linear transformation, non singular linear transformation, ये दो ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे मैप्स हैं जो बेसिकली इन्वर्टिबल हैं, इनका यूज भी हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे हम वन वेरिएबल इनवर्स फंक्शन थ्योरम का स्टेटमेंट देते हुए हम जनरल इनवर्स फंक्शन थ्योरम का स्टेटमेंट देंगे और उसका प्रूफ करेंगे। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.